Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sriparna and thank you so much for joining me today. And if you are new to my channel, most welcome. So in today's video, I am going to make lotus pond resin art. Actually, I was thinking of making this for a long time and finally today I made it. So stay tuned with the video. For this DIY, we need MDF board, acrylic colors, clay and resin. Here I am using 2:1 रेशियो का resin and ये resin दो बोतल में आती है. एक resin का बोतल है और दूसरे बोतल में आती है हार्डनर. एंड इस दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद ही resin यूज़ करना है. एंड इस बोतल के साइड पे भी सारी डिटेल्स है, आप चाहो तो इस बोतल के साइड पे भी देख सकते हो. नाउ आई एम टेकिंग दिस MDF बोर्ड एंड क्ले को प्रॉपर मिक्स करने के बाद मैं इस बोर्ड के ऊपर ऐसा अटैच कर लूँगी ताकि जब मैं इस पर रेसिन यूज़ करूँगी रेसिन बाहर ना निकल आए. नाउ आई विल पेंट दिस बोर्ड यूजिंग एक्रेलिक कलर्स. द सप्लाईज आई एम यूजिंग टुडे मैं सब ऑनलाइन से परचेस किया है, बट अब चाहो तो लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हो. पेंट पूरा ड्राई होने के बाद मैं कुछ लोटस लीफ ड्रॉ कर लूँगी इसमें. Now I am making little lotus leaf and some lotus flower using clay. First I will show you how I make small lotus leaf. And now I will show you how I make this small lotus. First I will make lotus petals जो काफ़ी small है and next कुछ इस तरह से सारे petals को ऐसे अटैच कर लूँगी. Now I will color them using acrylic colors. ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है वर्किंग विद रेसिन आर्ट, सो प्लीज़ लेट मी नो आप सबको कैसी लगी. Next I am making a boat using clay. बोट थोड़ा सा ड्राई होने के बाद नाउ मैं इसे पेंट कर लूँगी एक्रिलिक कलर से. नेक्स्ट आई विल स्टार्ट रेसिन वर्क. रेसिन टू टाइप की होती है, एक होती है 3:1 और एक होती है 2:1 वाला रेशियो का रेसिन. तो मैंने पहले ही बताया है कि मैं 2:1 रेशियो का रेसिन यूज़ कर रही हूँ. ये 2:1 रेशियो का रेसिन कोटिंग रेसिन है. इसे हमें कोट करना है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि MDF बोर्ड, ग्लास की कोई चीज़ और फिर कैनवस बोर्ड और फोटो फ्रेम. और एक बात ध्यान में रखना, हमेशा रेसिन की क्वांटिटी हार्डनर की क्वांटिटी से ज़्यादा होता है. अगर आप 2 चम्मच रेसिन लिया है तो 1 चम्मच हार्डनर लेना. ये 2:1 रेशियो का रेसिन का मतलब ही है 2 पार्ट ऑफ रेसिन एंड 1 पार्ट ऑफ हार्डनर. मैं यहाँ पे रेसिन और हार्डनर को एक साथ 10 मिनट तक मिक्स किया. देन मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर इस पर ऐड करके एक साथ मिक्स कर लिया. नाउ आई एम अप्लाइंग दिस लिक्विड ऑन आवर बोट एंड इसे ऐसे धीरे धीरे स्प्रेड कर देना है. रेसिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि इसमें बबल ना क्रिएट हो जाए. एंड ये लिक्विड एक केमिकल है तो हैंड ग्लव्स यूज़ करना ज़रूरी है. 30 मिनट के अंदर आपको इसके ऊपर जो भी डेकोरेट करना है वो कर लेना चाहिए, बिकॉज 30 मिनट से ये ड्राई होना स्टार्ट कर देती है. इसे ड्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगती है. मेरी रेसिन की बोतल के साइड में ड्राई होने के जो इंस्ट्रक्शन थी मैंने उसे ही फॉलो किया. इसे टच ड्राई होने में 24 आवर्स लगती है एंड फुल्ली क्योर विद इन 72 आवर्स टू अचीव अ स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल फिनिश. So that's all about today's video. I really hope you like this idea. If do, please give this video a like and subscribe to my channel.
Thank you so much for watching this video. I will see you all in the next video soon. Till then, take care. Bye.